Pakistan and the 8 Billion Planet. Zeba Sathar Dawn Editorial. Published November 26, 2022. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. This year the world's population reached 8 billion in Pakistan's 230m. The world paused to absorb a major milestone in humanity, an unprecedented and exponential increase largely due to longer survival of the species, major scientific strides, and momentous events in human history. In Pakistan, we barely pause to reflect on what it means to have grown from 33m at independence to 230m in 75 years. We have slowly edged towards becoming the fifth largest country in the world. If our economy were thriving and natural resources infinite, then we might be justified in our lack of concern at the rapid population growth in Pakistan. Given that the multiple crises facing the country are almost all directly related to unabated population growth, why are we so unconcerned about the 230m Pakistanis today and the additional 110m we expect to add by 2050? What does Pakistan have to offer to our current and future generations, and why can we not tackle our rapid population growth? We must ask the difficult questions. Pakistan needs to finally wake up to the apocalypse. 1.4m unwanted births and 2.2m abortions and miscarriages each year that could be avoided through family planning. Voluntary family planning gives families choices. When we deny these choices, it is because of our callous attitude. After all, these are women and children whose lives will hardly intersect with ours, let alone match the standards we expect for ourselves. We celebrate the growth rate that has declined this year to 1.9%, but this is a meager decimal point decline achieved over several years. Above all, our growth rate is double that of Bangladesh, Malawi, Kenya, India, and Iran, all of which stridently pursue national agendas that aspire to rise from poverty, to provide jobs to the youth and to ensure universal health coverage and universal primary education. These are all basic civil rights from which we are deviating willfully. Why can we not tackle our rapid population growth? Last week, more than 3,000 attended the Gala International Conference on Family Planning in Pattaya, Thailand, to celebrate women and girls and the power of family planning to not just save but also to empower lives. What was striking was the fragmented Pakistani delegation of a handful of government officials and hundreds of NGO and independent members, mainly rallied around their own limited and rather unremarkable successes. It was an occasion to laud delegations from African countries with much lower GDPs, countries like Malawi, Rwanda, Senegal, that were there to seriously attend sessions and note innovations in order to improve their family planning programs and reach for greater success. Admittedly, the Pakistan delegates had a tough task to concede that there has hardly been any change in our fertility and family planning indicators since 2007, that this is not just worrying but alarming, and we should have been there to learn how the rest of the world was reaping huge benefits from family planning. The FP Exemplar session, which showed countries that had achieved huge success since 2010, presented Pakistan at the bottom of all possible metrics of performance in family planning. I realized the community that is entrusted with leadership in family planning needs to bring in the political leadership more, but it also needs to set its house in order and unite on how our family planning efforts could be redoubled to catch up with low-income counterparts. Nepal, Kenya, Sierra Leone, and Laos are exemplar countries that had much less going in their favor 10 years ago, but just determinately went about empowering communities, men, women and families to have fewer better-spaced children in order to give them a better future. We need, above all, to unite rather than work in silos, to plan and agree unequivocally on the next steps we will take to change the flatline that is our contraceptive prevalence rate. At no point in our history were we as culpable for injustice as during the recent floods when 33m people from the poorest districts of Pakistan were swept out of their homes to live as animals. Women and children suffered the most. And the biggest tragedy was that the scale of the disaster could have been vastly reduced if these underserved,
climate-vulnerable districts had received family planning, maternal and child care services. But the victims lived in neglected areas and faced a tragedy foretold. The population angle was not brought up at the COP27 conference, and is likely to elude our evolving damages and losses approach to climate change. Family planning and balancing population and resources must be ensured as part of our climate rehabilitation and rebuilding strategy. Miftah Ismail's recent piece on governance challenges states that the population problem is straightforward, easy to solve. Family planning does not require much money, just resolve and competence. The message for our current and future federal and provincial governments, NGOs and development partners is simple and clear. 1. Do not mystify and complicate a looming high population growth rate accompanied by millions of unwanted pregnancies and babies each year, just to abrogate responsibility. 2. No new policies please, we have enough of those. 3. Start now, plan ambitiously, implement quickly with good technical advice to expand family planning services within the health sector, both static and community-based. 4. No coercion is required for family planning adoption, just common intuition and a general rendering of reproductive justice, by providing information and services for voluntary family planning to couples and women to enable them to have a better balance between children and ensure their full rights. 5. Add innovations and strategies to break the impasse on population indicators, but based on evidence of their effectiveness, potential impact and costs. 8 billion is a landmark for the world's population. Let it also be a landmark for Pakistan's history, as the year we decided we would switch from producing droves of Pakistanis searching for jobs the world over, to a strong nation of educated, healthy and vibrant citizens. Only then will Pakistan stand up and be counted other than as the wretched disaster of too many with too little to offer humanity. The writer is Country Director, Population Council. Published in Dawn, November 26, 2022. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. रवां साल दुनिया की आबादी 8 अरब और पाकिस्तान की 23 करोड़ तक पहुंच गई। दुनिया ने इंसानियत में एक अहम संग-मील को जज्ब करने के लिए रोक दिया। एक गैर मामूली और गैर मामूली इजाफा बड़े पैमाने पर प्रजातियों की तवील बका, अहम साइंसी इक़दामात और इंसानी तारीख में अहम वाक़यात की वजह से। पाकिस्तान में हम बमुश्किल इस बात पर गौर करने के लिए रुके कि आज़ादी के वक्त 33 मिलियन से बढ़कर 75 सालों में 230 मिलियन तक पहुंचने का क्या मतलब है। हम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमारी मईशत फल फूल रही होती और कुदरती वसाइल लामहदूद होते तो शायद हम पाकिस्तान में आबादी में तेजी से इजाफे पर अदम तवज्जुही का जवाब पेश करते। ये देखते हुए कि मुल्क को दरपेश मुताद्दिद बहरानों का बराह रास्त ताल्लुक आबादी में बेतहाशा इजाफे से है, हम आज 230 मिलियन पाकिस्तानियों और 2050 तक इजाफी 110 मिलियन इजाफे की तवक्को के बारे में इतनी बेफिक्र क्यों हैं? पाकिस्तान को अपनी मौजूदा और आने वाली नस्लों को क्या देना है और हम अपनी तेजी से बढ़ती हुई आबादी से निपटने के लिए क्यों नहीं कर सकते? हमें मुश्किल सवालात पूछने चाहिए। पाकिस्तान को आखिरकार क़यामत से बेदार होने की ज़रूरत है। हर साल 1.4 मिलियन नापसंदीदा अपदिश और 2.2 मिलियन इस्कात हमल और इस्कात हमल जिनसे ख़ानदानी मनसूबा बंदी के ज़रिए बचा जा सकता है। रज़ाकाराना ख़ानदानी मनसूबा बंदी ख़ानदानों को इंतखाब फराहम करती है। जब हम इन इंतखाबों से इनकार करते हैं तो ये हमारे बेरहम रवैये की वजह से है। सबके बाद ये ख्वातीन और बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी शायद ही हमारे साथ मिल जाएगी। अकेले मेयार हम अपने लिए तवक्को करते हैं। हम इस साल की शरह नमू का जश्न मनाते हुए 1.9% रह गई है, लेकिन ये कई सालों में हासिल करदा एक मामूली अशारी पॉइंट की कमी है। सबसे बढ़कर ये कि हमारी शरह नमू बांग्लादेश, मलावी, कीनिया, भारत और ईरान से दुगनी है और ये सब कौमी एजेंडों पर सख्ती से अमल पैरा हैं जो गुर्बत से निकलने, नौजवानों को रोजगार फराहम करने और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को यकीनी बनाने के ख्वाह हैं। ये सब बुनियादी शहरी हुकूक हैं जिनसे हम जानबूझकर इन्हिराफ कर रहे हैं। हम अपनी तेजी से बढ़ती हुई आबादी से क्यों नहीं निपट सकते?
गुज़िश्ता हफ्ते थाईलैंड के शहर पटाया में ख़ानदानी मनसूबा बंदी के मौजू पर मुनक़दा बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में 3000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की, जिसका मकसद ख़वातीन और लड़कियों को मनाना और ख़ानदानी मनसूबा बंदी की ताकत को न सिर्फ बचाना बल्कि ज़िंदगियों को बाइख्तियार बनाना है। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि मुट्ठी भर सरकारी ओहदेदारों और सैकड़ों NGOs और आज़ाद मेंबरों पर मुश्तमिल बिखरे हुए पाकिस्तानी वफ़द ने बुनियादी तौर पर अपनी महदूद और बल्कि गैर मामूली कामयाबियों के अर्द गिर्द रैली निकाली। मलावी, रवांडा, सीनेगाल जैसे ममालिक में GDPs बहुत कम रखने वाले अफ्रीकी ममालिक के वफूद की तारीफ करने का यह मौका था, जो अपने ख़ानदानी मनसूबा बंदी के प्रोग्रामों को बेहतर बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए सेशंस में संजीदगी से शिरकत और जिद्दत तराजियों को नोट करने के लिए मौजूद थे। ये तस्लीम किया जाता है कि पाकिस्तानी मंदूबीन के लिए एक मुश्किल काम था कि वो ये तस्लीम करें कि 2007 के बाद से हमारी ज़रख़ेज़ी और ख़ानदानी मनसूबा बंदी के इशारियों में शायद ही कोई तब्दीली आई हो। ये न सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि तशवीशनाक भी है, और हमें यह जानने के लिए वहाँ जाना चाहिए था कि बाकी दुनिया किस तरह ख़ानदानी मनसूबा बंदी से बड़े पैमाने पर फ़वाइद हासिल कर रही है। FP मिसाली सेशन, जिसमें 2010 के बाद से बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले ममालिक को दिखाया गया, ने पाकिस्तान को ख़ानदानी मनसूबा बंदी में कारकर्दगी के तमाम मुमकिना मैट्रिक्स में सबसे नीचे पेश किया। मैंने महसूस किया कि जिस कम्युनिटी को ख़ानदानी मनसूबा बंदी की क़यादत सौंपी गई है, इसे सियासी क़यादत को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की ज़रूरत है, लेकिन इसे अपना घर तरतीब देने और इस बात पर मुत्तहिद होने की भी ज़रूरत है कि किस तरह कम आमदी वाले हम मनसूबों को पकड़ने के लिए हमारी ख़ानदानी मनसूबा बंदी की कोशिशों को दुगना किया जा सकता है। नेपाल, कीनिया, सीरालियून और लाओस मिसाली ममालिक हैं जो 10 साल पहले उनके हक़ में बहुत कम जा रहे थे, लेकिन सिर्फ कम्युनिटीज़, मर्दों, औरतों और ख़ानदानों को बाइख्तियार बनाने के बारे में चले गए ताकि उन्हें बेहतर मुस्तक़बिल देने के लिए कम बेहतर फासले पर बच्चे पैदा किए जाएं। हमें सबसे बढ़कर सीलॉस में काम करने के बजाय मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, अगले इक़दामात पर मनसूबा बंदी और इत्तिफ़ाक़ करने के लिए, जो हम फ्लैट लाइन को तब्दील करने के लिए ले जाएंगे, जो हमारी माने हमल फैलाव की शरह है। हमारी तारीख़ के किसी भी मोड़ पर हम नाइंसाफ़ी के इतने मुजरिम नहीं थे जितने हालिया सैलाब के दौरान, जब पाकिस्तान के गरीब तरीन अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले 33 मिलियन अफराद जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने घरों से बह गए थे। ख़वातीन और बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और सबसे बड़ा अलमिया ये था कि अगर उन पसमानदा आबोहवा के ख़तरे से 2-4 अज़ला को ख़ानदानी मनसूबा बंदी, ज़च्चा और बच्चा की देखभाल की खिदमत हासिल होती तो इस तबाही के पैमाने को बहुत कम किया जा सकता था। लेकिन मुतासरीन नज़रअंदाज इलाकों में रहते थे और एक ऐसे सानिहे का सामना करना पड़ा जिसकी पेशगोई की गई थी। आबादी का ज़ाविया COP27 कॉन्फ्रेंस में नहीं लाया गया था, और इम्कान है कि आबोहवा की तब्दीली के लिए हमारे उभरते हुए नुकसानात और नुकसानात के नुक्ता नज़र से बचने का इम्कान है। ख़ानदानी मनसूबा बंदी और आबादी और वसाइल को मुतवाज़िन करना हमारी आबोहवा की बहाली और तामीर नू की हिकमत अमली के हिस्से के तौर पर यकीनी बनाया जाना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल के गवर्नेंस चैलेंजेस पर हालिया मज़मून में कहा गया है कि आबादी का मसला सीधा है, हल करना आसान है। ख़ानदानी मनसूबा बंदी के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अज़्म और सलाहियत की ज़रूरत है। हमारी मौजूदा और मुस्तक़बिल की वफ़ाक़ी और सूबाई हुकूमतों, NGOs और तरक्याती शराकतदारों के लिए पैगाम सादा और वाज़ेह है। हर साल लाखों नापसंदीदा हमल और बच्चों के साथ बढ़ती हुई आला आबादी की शरह को पेचीदा और पेचीदा न करें, सिर्फ ज़िम्मेदारी को ख़त्म करने के लिए। 2. बरा मेहरबानी कोई नई पॉलिसियाँ नहीं, हमारे पास उनमें से काफ़ी है। 3. अब शुरू करें, मातोएकानकशी तौर पर मनसूबा बंदी करें। सेहत के शोबे में ख़ानदानी मनसूबा बंदी की खिदमात को बढ़ाने के लिए अच्छे तकनीकी मशवरे के साथ तेज़ी से लागू करें, जामिद और कम्युनिटी की बुनियाद पर दोनों। 4. ख़ानदानी मनसूबा बंदी को अपनाने के लिए किसी जबर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आम बसीरत और तौलीदी इंसाफ की एक आम पेशकश। जोड़ों और औरतों को रज़ाकाराना ख़ानदानी मनसूबा बंदी के लिए मालूमात और खिदमात फराहम करके उन्हें बच्चों के दरमियान बेहतर तवाज़ुन रखने और उनके मुकम्मल हुकूक को यकीनी बनाने के। 8 अरब दुनिया की आबादी के लिए एक सन मील की हैसियत रखता है। इसे पाकिस्तान की तारीख़ के लिए भी एक सन मील की हैसियत से देखा जाए,
जिस साल हमने फैसला किया था कि हम दुनिया भर में मुलाजमतों की तलाश में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद पैदा करने से बदलकर तालीम याफ्ता, सेहतमंद और मुतहर्रिक शहरियों की एक मजबूत कौम में तब्दील हो जाएंगे। इसके बाद ही पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा और उसका शुमार बहुत से लोगों की मनहूस तबाही के अलावा किया जाएगा जिनके पास इंसानियत को पेश करने के लिए बहुत कम है। मजमून निगार पॉपुलेशन काउंसिल के कंट्री डायरेक्टर हैं। अखज़ शदा बतारीख 26 नवंबर 2022। For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.